Hello, good morning, students. We are discussing effects of inflation on the economy as a whole. In the last video lecture, we discussed Keynesian view. Keynes और उसके followers क्या मानते हैं कि inflation promotes economic development, and they have given argument in favor of that. And we have already discussed the point. I am repeating. Inflation redistribute income in favor of business community, those who have high marginal propensity to save and invest. So promotes economic development. Second, inflation creates the atmosphere of optimism. By this way, it creates promotes economic development. Third, and very important, inflation can be used as a policy or means by underdeveloped countries for development. And last, inflation is inevitable. Inflation is essential in the initial stage of process of economic development. But उसके बिल्कुल अपोजिट व्यू मिल्टन फ्रीडमैन और उसके फॉलोअर का क्या मानना है कि इन्फ्लेशन इज ऑब्स्ट्रक्टिव टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट. And today we will discuss the arguments given by them. First, inflation is not inevitable during the process of economic development. जहां से बात खत्म हुई है वहां से शुरू होती है कि Keynes and his followers believe that inflation is inevitable in the initial stage of economic development. But while Milton Friedman and other economists believe that inflation is not inevitable, particularly in the modern times. It was inevitable. It was unavoidable in the past, where inflation was unplanned. अभी तो inflation भी planned है. When government is going announce that they are going to take inflationary policy, what will people do? People will take the steps to neutralize the effects of inflation. Okay? क्योंकि अभी सारा planned है और मीडिया के माध्यम से हमको पता चल रहा कि गवर्नमेंट इज गोइंग टू टेक दिस पॉलिसी, फिर एनालिसिस आएंगे कि ये होगा वो होगा. सो पीपल विल टेक स्टेप्स टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट. सो इट इज नॉट इनएविटेबल. It was inevitable in the past. Nowadays, it is not inevitable. It was not planned because it is planned. Therefore, we cannot go with the argument that inflation is inevitable during the process of economic development. Second, and very important, inflation adversely affects people's ability and willingness to save. Very simple. It adversely affects people's ability. Ability कैसे कम हो जाएगी? Suppose कि प्राइस राइज, जितना प्राइस राइज होगा उतना क्या परचेसिंग पावर कम होगा. So major part of your income gets spent on purchasing of goods and services. So very less amount will be left for your savings. मान लीजिए कि कोई पर्सन की सैलरी 40,000 थी, है, उसमें अर्लियर उसको 30,000 स्पेंड करता था और 10,000 सेविंग्स करता है. मगर अभी प्राइस इंक्रीज हो गया तो सेम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अभी उसको 37,000 रुपीज स्पेंड कर रहा है. सो उसके पास सिर्फ 3,000 रुपीज बच रहे हैं. ओके, वाई? ड्यू टू राइज इन प्राइस, मेजर पार्ट ऑफ हिज इनकम गेट स्पेंट ऑन परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज. इनकम के दो पार्ट है, सी वाई इज इक्वल टू सी, कंजम्पशन प्लस सेविंग. अगर कंजम्पशन में ज्यादा जाएगा तो सेविंग्स में कम रहेगा. सो इन्फ्लेशन एडवर्सली अफेक्ट्स पीपल्स एबिलिटी टू सेव. एंड मोर प्रॉब्लम वाली बात क्या है कि नॉट ओनली अफेक्ट्स एबिलिटी बट ऑल्सो विलिंगनेस टू सेव, बिकॉज पीपल फाइंड दैट वैल्यू ऑफ देयर सेविंग्स इरोज्ड ड्यूरिंग इन्फ्लेशन. वैल्यू इतना बढ़ नहीं रहा है. ओके, क्योंकि जितना सेविंग्स में उसको इंटरेस्ट मिलेगा उससे ज्यादा प्राइस बढ़ रही है. ओके, सो एक्चुअली प्रैक्टिकली ही इज नॉट गेटिंग by investing money
in fixed income yielding assets like FD, etc., etc. So what will happen? So people will divert towards making investment in unproductive assets like gold, क्योंकि ये जो चीज है उसको इन्फ्लेशन में इसके प्राइस ज्यादा बढ़ते हैं. Gold, silver, land, urban property, etc., etc. So such unproductive asset, investment in such unproductive asset is very very harmful for the health of economy. वो इकोनॉमी को नुकसान कर सकता है. Getting my point? So this is the reason why inflation is obstructive to economic development. Next, distorts the pattern of investment. Inflation distorts the pattern of investment. Because inflation में क्या होगा? Profit जल्दी बढ़ेगा. Demand rises faster than profit. So it encourages producers to make investment only in those areas by which they can get quick profit. जल्दी से जल्दी उसको प्रॉफिट मिल जाए, उसका प्रोडक्शन क्या रहेंगे? लग्जरियस गुड, सेमी लग्जरियस गुड, वेज गुड, एक्सेट्रा. बट इसेंशियल एरियाज लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो वो निग्लेक्टेड बाय इन्वेस्टर. सो इट डिस्टॉर्ट्स द पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट. ओके, ज्यादा क्या हो जाएगा? जो क्लास जो डिमांड करता है ना, उसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो जाएगा, नहीं कि मास. ओके, सो inflation on the one hand, from this point of view, inflation distorts the pattern of investment. Okay, because inflation encourage the making investment in only those areas by which they can get quick profit, luxurious and semi-luxurious goods, rather than production of essential commodities. Okay, next, very important, it causes fundamental disequilibrium in the balance of payment. Balance of payment disequilibrium में कब होगी? When total value of our import is greater than total value of our export. Okay, value of total import, because balance of payment includes both visible items of export and import and invisible items of import and export. When total value of our import is greater than total value of our export, we can say that balance of payment is in disequilibrium, balance of payment is in deficit, or it is known as adverse balance of payment. तो इन्फ्लेशन से ये क्यों होता है? Why? Because on the one hand, during inflation, our exports tends to fall and imports tends to rise. So both the way, it is responsible for creating deficit in the balance of payment. अब हमारी एक्सपोर्ट क्यों कम होगी? ड्यू टू राइज इन प्राइस. व्हेन प्राइस ऑफ आवर प्रोडक्ट्स, दोज आर सोल्ड इंटरनेशनली, prices of the goods and services increase in the international market. Price of our goods increase in the international market. क्योंकि इंडिया में इन्फ्लेशन है, इसका मतलब ये नहीं कि सारी जगह और कंट्रीज में भी इतना इन्फ्लेशन है. Okay, due to rise in price, our product will lose their competitive strength in international market. And this is the reason our exports tend to fall. On the other hand, अपने देश में चीजों के प्राइस इंक्रीज हो गए, तो हमारे लिए जो एक्सपोर्टेड आइटम्स है, जिसका हम लोग इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्टेड आइटम है, सॉरी, उसके दे आर रिलेटिवली चीपर. फॉर एग्जांपल चाइनीज प्रोडक्ट. ओके, so what will people will do? People will import more from other countries. Why? Because they are relatively cheaper than the domestic products. Okay, so on the one hand, exports tends to fall, and on the other hand, imports tends to rise. So both the way, it creates fundamental disequilibrium in balance of payment. और import बढ़ने का और एक कारण भी है कि ड्यू टू राइज इन मनी इनकम ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, पीपल प्रेफर इम्पोर्टेड आइटम्स. ओके, कि अभी जो I'll prefer only imported in international brand. This is also the reason, due to rise in money income, okay, people import more and more goods and services from foreign countries. So inflation, this way inflation is very very harmful to the economy because it creates
fundamental disequilibrium, not only simple, fundamental disequilibrium in balance of payment. This is very important. It is a form of regressive tax. कई स्टूडेंट्स ने ये वर्ड नहीं सुना होगा, रिग्रेसिव. देयर इज नथिंग लाइक रिग्रेसिव टैक्स. प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता. टैक्सेस आर जनरली, टैक्स स्ट्रक्चर क्या होता है? प्रोग्रेसिव. व्हाट इज प्रोग्रेसिव स्ट्रक्चर? टैक्स स्ट्रक्चर, एज योर इनकम इंक्रीजेस यू हैव टू पे मोर टैक्स. ओके, जैसे इंडिया में है अप टू 2.5 lakhs नो टैक्स, 2.5 to 5 lakhs 5%, 5 to 10 20%, and above 10 30%. That is known as progressive tax. Okay, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आपको ज्यादा से ज्यादा टैक्स भरना पड़ेगा. दिस इज सुटेबल विद द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी. सारे कंट्रीज में, दुनिया के सारे कंट्रीज में यही टैक्स स्ट्रक्चर है, because it is more suitable to the canon of equity or canon of equality. Okay, मगर regressive tax क्या है कि as your income increase you have to pay less tax. अभी ऐसा कोई स्ट्रक्चर तो नहीं हो सकता है. मगर इन्फ्लेशन क्यों होता है? इन्फ्लेशन में ये क्या होता है? बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट ड्यूरिंग इन्फ्लेशन इनकम ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, प्रोड्यूसर्स, ट्रेडर्स increases. Okay, while inflation hits hard to middle classes, lower middle classes, poor classes, salary earners, wage earners, etc. So a income inequality. So income of rich people increase. On the other hand, either income of poor people fall or remain stagnant. तो जो भी टैक्स है उसको भरना पड़ेगा. अगर कोई एक्स प्रोडक्ट है, उसकी उसमें प्राइस ₹20 है, मगर गवर्नमेंट टैक्स लेगी, जीएसटी वगैरह वगैरह, उसके ऊपर ₹10 टैक्स है, तो अभी एमआरपी उसकी ₹30 है. तो जिसकी इनकम 2 करोड़ की होगी वो भी ₹10 टैक्स भरेगा, और जिसकी इनकम 1 लाख की होगी वो भी ₹10 टैक्स भरेगा. सो इन प्रपोर्शन टू हिज इनकम ही इज पेइंग मोर. जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी, so poor people have to bear more burden. From this point of view, it is regressive tax. Getting my point? Because in proportion to their income, they have to pay more tax. That is the reason we can say inflation is a form of regressive tax. बात समझ में आई? Okay? So progressive tax का opposite regressive tax, और inflation ये point of view regressive हो जाता है. Next है last, income increases. It increases income inequalities. We have just discussed that inflation is always welcomed by business community. Producers, entrepreneurs, traders, investors in equities, they gain more. Income inequality बढ़ती है. On the other hand, inflation hits hard to poor classes, middle classes, lower middle classes, salary earners, etc. etc. It widens the gap between poor and rich, and which is very, very harmful for the economy. Very good sentence used by Professor C.N. Vakil. Again, inflation may be compared to a robber. Robber है वो. Both deprive the victim of some possession, with the difference that robber is visible, inflation is invisible. The robber's victim may be one or few at a time. The victim of inflation is the whole nation. The robber may be dragged to a court of law, while inflation is legal. Okay, so inflation is like a robber. Okay, so it increases the gap between poor and rich. Okay, so I am repeating. Inflation is not inevitable during the process of economic development. It was inevitable in the past. Second, it not only affects people's ability to save, but it also adversely affects people's willingness to save. It distorts the pattern of investment by encouraging more investment in the production of luxurious goods. Creates fundamental disequilibriums. It reduces our exports,
it increases, it is enhancing our import. So by both way, it creating fundamental disequilibrium in balance of payment. It is a form of regressive tax. And last, it widens the gap between poor and rich. आज के लिए इतना रहेगा. Thank you very much.